एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। मेघालय सरकार ने राज्य भर के शिक्षकों के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि ये एकेडमी टीचर्स की क्षमता को और मजबूत बनाएगी और विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम्स में सुधार लाएगी। शिक्षा मंत्री लहकमे रिम्बुई ने कहा कि अब एडहॉक वर्कशॉप्स की जगह साल भर चलने वाला स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू किया जाएगा, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। And doing all the activities that are necessary without being involved in other kind of administrative or other activities which require government and administrative work, and focus purely on the training of teachers. And it's really with that very simple yet clear thought that we are all here today to officially inaugurate it. It's not the inauguration of this building, but it is the inauguration of this academy. Let me be very clear, this building was inaugurated long time back, but this academy is new, the setup is new, and the purpose is new. So therefore, I congratulate our Honourable Minister and the entire Education Department for this wonderful step that they have taken in order to make this academy functional today. And friends, this all stems out of few of the challenges that we face. You are aware that we have a lot of deficiency when it comes to teacher training, and hence there needs to be a special focus on it. We have a large number of teachers who are not yet technically, as per the qualification required, trained, and therefore certain steps are still further. That does not mean that they are not good at teaching, but as per the qualifications required, we need to complete certain processes. This academy will help us to move towards that goal. At the same time, as you're aware, that many of the factors like the overall learning outcomes that are there, all of these aspects, especially in the PGI, where we are always facing a lot of challenges, need to be addressed. And I'm sure that with the help of the EDB project, with the help of the Education Department, and with the help of what we are doing here in terms of focusing on the training aspect, it will have a direct impact on the overall PGI, the rankings that we have. You must be aware that in the last 2 months, we have been really focusing on सीनियर एनपीपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अम्परीन लिंगदो ने स्पष्ट कहा है कि इनर लाइन परमिट लागू करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि जनता को ऐसे वादों से गुमराह न किया जाए जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। Since 1978 onwards, this ILP agenda continues to surface from time to time. But with the progress of time, with the expansion of entrepreneurship, with the need now to further empower economically and provide jobs for the citizens of the state, more and more opportunities have been created, firstly by the Government of India and subsequently adopted by state governments across this nation. Citizens in different locations have different perspectives and views of a simple or maybe a very complicated matter like ILP. There are also political deterrents in this matter. There are constitutional clashes on this matter. And I think in this generation, by and large,
citizens are far more equipped with information. That there is a constitutional clash on the matter of ILP is more or less understood by the people. That there is an inconvenience on the adoption of an ILP model is again now surfacing, and you're hearing voices from communities across the length and breadth of the state of Meghalaya who now have a different view on the matter of ILP. However, should any issue of this matter be only taken as a yardstick by pressure groups, or should every voice in every corner of the state be also equally attended to? ILP is a matter which, to a large extent, does not lie in the domain of state governance. It is a matter which is going to be decided by the Ministry of Home Affairs in consultation with stakeholders and representatives of governance of the state of Meghalaya. It is not a decision that we can take. I think by now, the people of the state of Meghalaya are aware of this fact. There was a misconception, for example, when I was first elected to the Legislative Assembly, that a state government can take such a decision. But today I am far more educated and I understand the complications related to this matter. Like me, I'm sure there are many other citizens who are aware of these factual realities. So for any political party to try and hijack this agenda and make it look that vote for that party and once they are elected, they will sort the matter out is incorrect. They cannot take people for a ride. You have to be factual. You have to substantiate your grounds on your ability to deliver ILP if elected based on facts, based on what is actually possible and what is. मेघालय सरकार ने सोहरा हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तुरंत रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि रिहा होने पर आरोपी फरार हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने पर सहमति दे दी है। राजा रघुवंशी के परिवार ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया है। As far as the status of the case is concerned, the matter is already finished. I mean, it is already disposed of, and the Honorable High Court has already rejected the petition filed by the state, thereby upholding the trial court's order, which means that the bail which they had challenged stands secured. And now, as on date, there is no petition pending in so far as the High Court is concerned, and the criminal petition which they had filed stands rejected. We heard that Even I have learned about it, but I'm not really sure about it. But yes, I have also heard that there are rounds doing in all the media that they have preferred the SLP before the Honorable Apex Court, and the matter was moved today and is slated to be listed again tomorrow. But I cannot verify this this particular fact or particular statement, because we have not yet. I mean, at least the Sonam has not received any notice of it. well, See, I cannot really say that, but yes, I can only at the moment I can only say that the grounds on which Sonam has been granted bail are very cogent ground, and if I can put it that way, it's very sound ground, because that pertains to the violation of a right under Article 21 and 22. Therefore, the ground on which the Honorable High Court as well as the trial court had granted her bail
appears to be a very reasonable and a cogent on the basis of very reasonable and a cogent ground. But So I do not know if they have received or not, but yes, we have learned that the state has approached the Honorable Apex Court and the matter will come in due time. Sonam has whether Now there is no confirmation. खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन टाइटस टावल चाइन ने ब्लिंकेट के मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाने की बात कही है। जहां खड़ग एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने स्थानीय दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी को लाइसेंस डीन से इनकार कर दिया, वहीं चाइन ने कहा कि पारंपरिक व्यापार और बदलती उपभोक्ता जरूरतों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। Is exist also, I am not aware. When they have closed down also, I am not aware. I think it depends on the policy of the executive committee. But with your reference to the views given by the public, I feel that should be balanced with what business is continue here in our state, especially in Shillong. So, according to my personal views, I feel that as they are always mentioned that we have to go according to the time, according to the development for the state, especially the city. So, I don't see any wrong with it. That is my personal view. Because why I'm saying that? Because we saw nowadays people are buying things online only. Sometimes with the clothes, with the shoes, even this Amazon, Mantra, other online business is going on now. So I feel that if they can stop Blinkit, they can stop other agency also that will help the local entrepreneur. But you can, in other hand, you cannot stop the choice of the people. Nah? It should be at their liberty, from whom they want to order their things, because they should have their freedom to choose what to buy or what not to buy, from whom to buy. That is their choice. Because nowadays you cannot stop people just from the mobile. They can order anything nowadays. You see, in the mobile, if you scroll it, you can buy anything. So, to me personally, I don't feel it's a harm. But yes, of course, it affects the local entrepreneur also, local shop also, when there is so much online. But that depends on the public. Right. स्पेन और फ्रांस एक और भयंकर हीट वेव के लिए तैयार हो रहे हैं। स्पेन के कुछ इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों ने जंगल की आग का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। फ्रांस में भी कई बेड वाइल्ड फायर पर काबू पाने की कोशिश जारी है, जबकि पेरिस और आसपास के इलाकों में एयर कंडीशनर खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। समय हो चुका है यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। आप सभी का फिर से स्वागत है। देखते हैं अब बाकी की खबरें। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के 2 फैकल्टी मेंबर्स को 2025 SCI रैंक ग्लोबल रजिस्ट्री में दुनिया के टॉप 5% वैज्ञानिकों में जगह मिली है। Dr. युगल किशोर मोहंता और डॉक्टर मोहित एल देव को उनके उत्कृष्ट रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय ने ISE पूर्वोत्तर भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। म्यांमार के राखिने स्टेट में सेना के नए एयर स्ट्राइक्स के बाद बांग्लादेश की और रोहिंग्या शरणार्थियों के एक और बड़े पलायन की आशंका बढ़ गई है।
मोंगदाव और बुथिडोंग में बढ़ती हिंसा के बीच कॉक्सेस बाजार के शरणार्थी कैंप्स में रह रहे रोहिंग्या लोगों में भी चिंता का माहौल है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इंस्त्रिकंड ने गल्फ ऑफ अडेन में एक पायरेसी की कोशिश को सफलता से नाकाम कर दिया। भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्गो ले जा रहे मर्चेंट वेसल एमवी गोल्डन आर्सेनल को पायरेट्स ने निशाना बनाया था। क्रू ने सुरक्षित रूम में शरण ली और अलर्ट जारी किया। इंस्त्रिकंड के पहुंचते हाई पायरेट्स फरार हो गए, जिसके बाद मरीन कमांडोज ने जहाज को सुरक्षित कर लिया। BSNL ने भारत के टॉप 5 ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स में अपनी जगह बरकरार रखी है। TRAI के अनुसार कंपनी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में तीसरे और वायरलेस ब्रॉडबैंड में चौथे स्थान पर है। पिछले 2 सालों में BSNL की आय में 19% की वृद्धि हुई है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख टावर्स पर स्वदेशी 4G सेवा का रोल आउट भी पूरा कर लिया गया है। BSNL continues to hold a significant position in India's telecom sector, remaining among the country's leading broadband service providers. According to TRAI data, it is the third largest fixed wired broadband provider and ranks 4th in wireless broadband subscribers. The company has also reported a 19% increase in revenue over the past 2 years and has rolled out indigenous 4G services across 1 lakh towers, marking a major milestone in its network expansion. राजस्थान के श्री गंगानगर से एक दिल दहला डीन वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक 13 साल की लड़की को ई-रिक्शा ड्राइवर ने ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया, होटल ऑपरेटर्स को बेच दिया और 5 दिन तक 30 से अधिक लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस ने कई आरोपियों, जिनमें होटल मालिक भी शामिल है, को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। इस बीच प्रशासन ने आरोप से झूठ होटलों और संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।